to thank PVR, Inox, and I would like to call Kamal first onto here to really speak about this prestigious festival, and thank you, Shivendra. This wouldn't have been possible without your perseverance, without your persuasion. As exhibitor, distributors, we've tried to bring back the sharing folklore to put it all together. But thanks to Shivi, this initiative, this festival has become possible. You know, as Shivendra mentioned earlier, within 2 days we sold about 25. to come here and watch these films. I want to now call somebody who's worked with Dev Saab. Personally, I could maybe write 2 or 3 novels about the memories that he has created within me, within my family. But one thing that keeps on coming to my mind is when he launched me, I was in 7th grade. The life and the work line of Bollywood, but he taught me how to speak Hindi. He embraced me and my mother so lovingly into his family, into Goldie Saab's family, Chetan Saab's family, and I always say my schooling was Dev Saab. Instead of being in school and completing that, I started off with Dev Saab, and I had taken which is very surprising, I had taken a break now, some personal dreams, to fulfill some personal dreams, and I've come in front of the media and in fact into event, anything to do with Bollywood after a gap of 4 years. And once again it is Dev Saab, you know, who's got me back here. And of course Shivendra Singh, Dudapur, my brother. Shivi is the first person who blessed me, and I love you, Shivi. The only thing that I want to say now at the end is that Dev Saab hasn't gotten his title evergreen just like that. Which person, which personality, whose 100 years of हमारे evergreen हमेशा थे और हमारे evergreen हमेशा रहेंगे. And thank you all for being here, and thank you for having me here. Rajiv, can I please have you? We're thankful to him because we're watching Johnny Mera Naam today. The producer and Rajiv Rai, also a great director. Great day. Thank you, Shivi, for inviting me and inaugurating this function with Johnny Mera Naam, which was, as we all know, a big success. And I would like to thank everyone here, the PVR team, and whoever, all the people that have organized this. No sound coming. No, this coming. We can hear you. Yeah. This thing mic. Anyway, so I don't think I'll take much time. A very dear friend of Dev Saab, and he instigated my father to make Johnny Mera Naam, which was Trimurti Film's first film. We started this film in 1969. We were distributing most of Dev Saab's films. And then he told my dad, isn't it a proud moment that your dad's 3 films restored by 4K is shown? Were the films and as fresh as family, onto your family, Goldie Saab's family, my bro here, and Rajiv Rai. I don't have to say much. It's just that I'm lucky to be part of this family. मेरे को पहला पिक्चर देव साहब ने दिया था जिसमें मैं शक्ति कपूर का लेफ्ट हैंड बना था, तो मेरे हाथ सर पे देव साहब का पहला हाथ है. तो देव आनंद साहब आपके लिए मेरे स्वामी दादा ब्लू आंख बंद किया मैंने, मतलब मेरे सर पे हाथ रख दिया. देव है मेरे लिए. माय देवानंद साहब इज माय देव, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द टीम आउट हियर. आप लोगों ने हमको बनाया है और आप लोग फिर से देखने आए हैं. आई एम रियली हैप्पी दैट यू गोना वॉच ऑल 4 फिल्म्स as we go ahead. Enjoy yourself, guys. Thank you, Dada. Now, one and only, WAHEEDA ji. WAHEEDA ji. The legend. थोड़ा पतली गली.
पीछे आ जाइए प्लीज। पीछे आप लोग पीछे आ जाइए। पीछे जाइए। आज देवानंद साहब का हेलो ठीक, आज देवानंद साहब का 100वां साल है और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ क्योंकि मेरी पहली फिल्म देव साहब के साथ थी, वो थी CID। और जब हमको इंट्रोड्यूस कराया गया तो मैंने कहा देव साहब, तो कहने लगे वहीदा तुम मुझे देव साहब नहीं कहोगे। मैंने कहा मैं इतनी बदतमीज़ तो हूँ नहीं, आप मेरे से इतने बड़े हैं और इतने बड़े स्टार हैं और मेरी ये पहली फिल्म है, मैं कैसे नहीं आपको देव साहब कहूँ। तो कहने लगे मुझे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती है, कोई साहब कहता, मुझे ऐसा लगता है मैं स्कूल टीचर हूँ। इसलिए कहने लगे सिर्फ आप देव, तुम मुझे सिर्फ देव कहोगे। और वो एक ही हीरो हैं, एक ही एक्टर हैं जिनको मैं उनके फर्स्ट नेम इससे बुलाती हूँ, देव। और एक वक्त भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं दिया कि वो बहुत बड़े स्टार थे उस वक्त और मेरे से बड़े उम्र में थे। इतनी कंफर्टेबल फीलिंग, इतनी कोऑपरेटिव थे। आई एम सो प्राउड टू हैव वर्क विद अ लेजेंड लाइक देव आनंद। I wish he was here. I'm sure up there he must be feeling very happy because हम सबके तरफ से इतना प्यार मोहब्बत उनको मिली है कि पूछिए मत। और वो एवरग्रीन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। He was a very charming person, charming personality, very dedicated, very punctual, a thorough gentleman. It was wonderful, such a pleasure to have worked with him. I'm so proud. And being in guide, he is one of the reasons कि वो कहते थे रोजी का रोल कोई और नहीं करेगा बंदा सिवाय तुम्हारे। तो I'm very happy. God bless him and God bless him. What can I say? मैं ज़्यादा बोलूँगी तो शायद मुझे रोना आ जाएगा। Thank you, Yadaji. Can we get the families, Chintan Saab family and Vibhu, we can light the diya. Yeah, let's light the diya. Join the diya. Please come. Anybody from? Please, camera please, let Divina come forward. Divina. Yeah. Divina, you're the right. Come here, Divina. Yeah, you have to come from there. Yeah. Come. Like this. Light the lamp. Vibhu? Yeah. Please light. Priyam? कैमरा पीछे करो ना, हाथ Come light हो. Please come. मोबाइल पीछे, Yeah, of course. You're मोबाइल पीछे करो गाइस, पीछे करो ना मोबाइल यार, बोलने के बाद भी नहीं कर रहे हो। इवेंट ऑर्गेनाइज को नहीं मिलेगा तो इंडियन छप रहा है भाई। Yes. Okay. Just give the posters. Can we get everybody to the stand with the posters? Where are the posters? Yeah. Just the last thing. We'll just pick up one poster each. And it was done. एक्सक्यूज मी यार हाँ आगे गाइस, थोड़ा पीछे जाओ ना, पीछे करो, सच को आगे। बस यार, तुम लोग सुन नहीं रहे कोई। बस हो गया। मैम मोबाइल प्लीज, सलामत मैम, प्लीज फोन मिल जाए ना। Okay. Just look at कैमरा मैम, फोन मैम, एक्सक्यूज मी, फोन नीचे करिए आप। विजय फास्ट जगू दादा सेंटर। यो या सेंटर लोग या सेंटर। Divya. Please. I've completely. Where's Divya? Mobile. Please come. भाई पीछे आना, तेरे को बोला मानी तो यार। हाँ मानी काम संभालने। आजा ना। ना तो लंबा और कितना लंबा जाओगे? हाँ, मेरे को सेंटर चाहिए। अरे भी लगा देता हूँ ना। 2 मिनट्स ना।
अपना बॉडी के पीछे हो ना, बाकी कैमरा लेके मत जाओ। लुक फ्रंट, लुक फ्रंट। यस, सेंटर्स। सर फ्लैश। Look on the right. चलो अभी जाने, इन लोग को बोलो जाने देना। चलो 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 चले हट के दुकान का चल बड़ो चल बड़ो हट के चल चल बिड़ो बिड़ो चल बिड़ो मेरे को हाथ में लगा आगे चलते रहो चलो निकल गए तुम सबको। थोड़ा कपड़े के लिए चल अजय थोड़ा जगह बताओ आगे चल ले लो ना भाई। Sorry. Yes, this is Rohini. Yes. So we thank you. Yes. पर गाइस ज़्यादा लाइट बंद करो यार। बहुत बहुत आपका, आप सर संभालो ऊपर और लाइट हमारे इतना क्यों मार रहे थे, दिख नहीं रहा क्या? चश्मा लगा मेरा इधर। कुछ अगर बताना चाहोगे कुछ अगर बताना चाहोगे? अभी नहीं अभी नहीं। मेरा कम है भाई, किस डे को खोला हूँ मैं? पीछे ही ना सर, बोवन आपका फ्रेम है दादा, तो आगे जाएगा। इतनी सारी यादें आपने अभी जस्ट शेयर की, मुझे बताना चाहोगे? क्या बताऊं कि मेरी पहली पिक्चर उनके साथ थी and I consider myself to be very lucky that my first picture was a legend like देवानंद, sorry, और वो एवरग्रीन हीरो थे, हैं, रहेंगे। और उनमें कुछ ख़ास चार्म था, तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी थी और चार्मिंग इंसान भी थे, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी पंक्चुअल, और इट वाज वंडरफुल वर्किंग विथ हिम। अभी अचानक तो कुछ नहीं याद आता है। वहीदा जी, आप उनको देव बुलाते थे, सर नहीं बुलाते थे, या फिर देवानंद जी, इस तरह से नहीं तो वो क्या? क्योंकि उन्होंने मना किया था, तो कहने लगे जब देव साहब, देव जी, मिस्टर आनंद कहते हैं तो मुझे एक दूरी महसूस होती है, तो आई डोंट फील कंफर्टेबल। हम तो दोस्त हैं, दोस्तों की तरह काम करेंगे, तो जी साहब मिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैम, आपने उनके साथ फिल्मों की शुरुआत की थी CID से, मैं जानना चाहूँगा उनकी कौन सी सबसे फेवरेट फिल्म है आपकी, अगर कुछ नाम आप गिनाना चाहें? उनके साथ हाँ। वाली ऑब्वियसली गाइड, और उसके अलावा उसके जो भी फिल्में थी अलग किस्म से बनाते थे, वो बहुत प्रोग्रेसिव ख्यालात के थे, वरना नहीं तो 60-65 साल पहले गाइड जैसा सब्जेक्ट अक्सर उस वक्त नहीं लेते थे। यू नो, इट वाज नॉट ए लव स्टोरी, इट वाज स्टोरी अबाउट 3 पीपल लाइक मार्को, रोजी एंड राजू। यू नो, तीनों के अलग अलग अपने अपने एम्बिशंस थे, और उस वक्त के लिए 60-65 साल पहले बहुत बोल्ड स्टेप था कि रोज़ी जाके बिना शादी के राजू के साथ रहने लगती है और हस्बैंड को एक तमाचा मार के वॉकआउट करती है। वो बड़ी इसकी बात थी, यू नो, बोल्ड। शुक्रिया जी, जब आप वो गाना गाती हैं, आज फिर जीने की तमन्ना, उस समय वो गाना, हालांकि मैं उसमें दिखाया गया कि मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ, मगर उस गाने में उन्होंने कुछ खास ऐसे मूवमेंट्स नहीं दिए कि मैं डांस कर रही हूँ। उसमें जो मूड क्रिएट किया कि पिंजरा खोल के, तोड़ के, सब बाहर निकल के, मटका फोड़ दिया उस समय, घुंघरू बांध के, यू नो, उदयपुर के सड़कों पे ये कर दिया। ऊपर जो भागना, उसके ऊपर जो आप भागी हैं, वो जो पैरापेट पे, दैट इज डाइसी। आपको मालूम भी है वो शॉट जो भागी ऊपर मन, उफ, अरे मुझे नहीं, क्या होगा जो विजय आनंद ने कहा, गोल्डी ने, कि जी आप गाते गाते ये बीच में एक दीवार से इतनी सी गैप थी और टूटे फूटे दीवार थी और नीचे पत्थर गिरे हुए थे, तो उन्होंने कहा गोल्डी ने कि ऐसे जंप करना है आपको, क्योंकि मैंने कहा गोल्डी, सॉरी हम उनको गोल्डी बुलाते थे विजय आनंद को, तो मैंने कहा भाई डर लग रहा है मुझे,
अगर मैं नीचे गिर के मर जाऊँ मुझे कोई गिला नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता गिर के हड्डी टूट गई, स्पाइन टूट गई, खुदा ना खास्ता बिस्तर में पड़े, तो विजयानंद कहने नहीं ऐसी बातें नहीं करो, कुछ मत सोचो, चलो मेरे साथ रिहर्सल करो। मैंने कहा साहब आपके साथ रिहर्सल करूँगी, जब शॉट होगा टेक में तो मैं थोड़ी नीचे देख के जंप करने वाली हूँ। तो बोले कुछ नहीं होगा। और तो उन्होंने 2-4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को दीवार के नीचे, और 4-5 फुट ऊंची दीवार थी, टूटे फूटे पत्थर थे। तो बस मैंने वो जोश भी, वो गाना भी ऐसा जोशीला था कि वाकई सब दुनिया की फिक्र जिक्र छोड़ के ये नाच रही है, गा रही है, तो वो बहुत अच्छा उसमें वो शॉट का असर आता है। वहीदा जी, ब्लैक कपड़े उन पर, एक लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक कपड़े उन पे बैन किए गए थे ऐसे कहा था क्योंकि ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम इन ब्लैक, ये बात कितनी? थैंक यू सो मच, थैंक यू दादा। After 40 years, and I'm going to give the mic to her as we remember Dev Saab. WAHEEDA ji is going to talk about her experience with Guide and celebrating Dev Saab's 100th birthday coming up on 26th. WAHEEDA ji. Okay. मैं खुश नसीब हूँ कि I got to work in Guide, and it was Dev Saab's choice that I should do that role, and I thoroughly enjoyed working in that movie. हालांकि कुछ 60-65 साल हो गए हैं उस फिल्म को बने, मगर लोग आज तक याद रखते हैं, उसके गाने सुनते हैं। कौन लाइट बंद कर चालू कर रहा है? तो चलो जिंदगी में कुछ तो अच्छा ढंग का काम करी। अभी पिक्चर शुरू करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, let's watch the film. Thank you very much. Thank you. No. After Dev Saab's launch, Shivi was the first person who entered my life, and the first one that I worked with, and then my brother. Got it? Yeah. My God! So on 26th it will be 100 years for Devanand ji. What would you like to say about the era of Devanand ji? It's such a wonderful era. I think that's the only real era where celebrities were stars. Stars in the literal sense. Like I always say that now in today's time, because of social media, celebrities have become very accessible. It's very easy to speak to them. It's very easy to see them. During the era of Dev Saab, it was very difficult for normal individuals to have even a glimpse of their favorite artist. So it was a huge era. I think that is the only time when you actually can call them stars. When you look back, and is there any memories or any movie, particular scene or a dialogue, would you like to share with the audience? Of Dev Saab or with me and Dev Saab? Of Dev Saab or you and Dev Saab also.
See, I was very young when Devsab launched me. I was in school. I was in 7th class when he got me all the way from Germany. And for him to find me, you know, I always say he actually found me. He did not just launch me, but he molded me because I was so young at that time. He molded me into the artist, into the person that I have become. And I have millions of memories of Devsab. You know, I learned how to speak Hindi on his set. I learned the ways of the industry. He knew that I'm so new to India itself that he made sure that his entire family, you know, Devsab, Goldie Saab's family, Chetan Saab's family, the kids, literally, Baba was here, Goldie Saab's son, literally played together. You know, so seeing all of them here after such a long time, my heart's like, I was saying I should have worn waterproof mascara so that I don't cry and get emotional, but it's beautiful. Like 100 years of Devanand, evergreen celebrity in the true sense. Right. You know, he was evergreen then and he always will be evergreen because tell me whose 100 years will you celebrate long after he's not there Yes, anymore? that's so true. As acting craft, what he used to say about the acting craft, he used to teach you about the acting or anything, especially that he has taught you during that time. You know, because I was so small and because I could not speak Hindi and I was so new, I didn't know what the camera is, I didn't know what makeup was. He would actually act out the scene. And today I value it. At that time I didn't know that, wow, Devsab is doing this. There was one scene where we were shooting for a song and Devsab wanted me to kiss the boy on the lips and I was very young. And he knew that I'm so, you know, just out of school and I will maybe be like, what is this? So Devsab stood there with the hero in front of him and he said, Mink, you just have to do whatever I'm doing. And he did the same thing, he tied this thing and then he hugged him and then he kissed that boy. Devsab kissed that actor on the lips to show me that this is just acting. This is not real, there's nothing wrong about it. And my mother was there and she was like, wow, I can't imagine that, you know, this is how you would teach somebody who's so new. And so many other things. If you would not get an emotion out of me, Devsab would tell me, Mink, imagine your mom is going. Imagine your mom is leaving you. How will you react? And I said, I'll be very sad. He says, yeah, exactly that. Just look very sad. Okay. So with me, I think this बच्चों को सिखाते हैं. You know, it was literally like teaching a kid. I have the most value. That's a particular great craft that he has taught you, I guess. That's a small thing that you are telling me and sharing with me. You know, Devsab taught me patience. Devsab taught me that you have to be very patient and you have to be very nice. Because I've seen him being nice to everybody on the sets. He was Devanand. Yes. You know, but he had such good manners. He was so well spoken. And he was very hardworking. Yeah. Lastly, I just want to ask you, any of your favorite movie of Devsab that you have seen in the recent time or in the entire of your life? You know, I have seen so many films of his. Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Yes. with Asha Parekh ji. Then Jewel Thief is one film that I love. I would sing the songs all the time of Jewel Thief. And there's so many. I even love Johnny Mera Naam. So I think mostly I liked it because of the songs. That's an iconic and of course, movie, Johnny Mera Naam. Guide, another iconic movie, which is so. And what I loved about Devsab is that he was so far ahead of his time. You know, us time pe he would launch actors who were so westernized, who looked so good, who were very different from the normal Indian heroine, you know, how they used to be. So he had a very far sight. And I think I could say a million things of Devsab and it would be too less. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Divya ji, smile. Thank you. I need the backdrop, so come here in the center. Divya ji, यहाँ पर we'll do a small one. So ma'am, firstly, what would you like to say on 26th? It will be 100 years for Devanand ji. It's a great memories for all the people. Tell us something about your memories with sir. I think I've been extremely fortunate to have known Dev Saab personally. जब मैं आई थी तो सबसे पहले उनके ऑफिस गई थी एंड व्हेन आई वर्कड विद हिम उन्होंने मुझे कहा तुम जब पहली बार आई थी यू वर वेरी रेयर हाउ मेनी पीपल हु मेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन देयर लाइव्स रिमेंबर हु वर व्हाट व्हेन दे केम सो वी हैड अ स्ट्राइकिंगली अमेजिंग मेमोरी when I shot with him, he was the first one who would come and ask, "Sab theek thak hai?" in our, to us, to me and my mother, "Sab theek ho?" Come to the shoot. He would just cheer you up. And my bestest memory with him has been watching Hum Dono in color, sitting right next to him. I guess ये experiences ना आप अपने दिल के करीब रखते हैं. And 100 years, I'm sure he's making some brilliant movies up there. He was never somebody who would sit and just rest. So, it's definitely an opportunity to celebrate him yet again. As an acting craft, what he used to say you about the acting skills, and is there anything that you have learned about him? Oh my God, so much zest, so much enthusiasm, so much energy, and just passion with which he worked. It is so infectious that it rubs on to everyone. कोई बैठता ही नहीं था उनके सेट पे. And I remember जगुदा तो बाहर गाड़ी पे उनके म्यूजिक लगाकर आराम से गाने सुनते थे. And when I would finish my shots, I would join him in. So yes, some beautiful memories. Any of his favorite movie that you would like to share? Lots of them. There's Hum Dono, there's CID, of course, Guide, there's Johnny Mera Naam. Johnny Mera Naam तो सब दिखा ही रहे हैं. Yeah. But तेरे घर के सामने is my huge favorite. So all those films. Thank you so much, ma'am. एक मिनट साइड साइड पीछे पीछे आइए एक मिनट फैमिली फोटोग्राफ आप साइड में आइए चलो जगह पे आइए Come please, come. विशाल विजय आ जाओ. Sir, look front, sir. Look front, sir. Sir, look front. ऐसे पीछे थोड़ी आते हैं कैमरा. Divya, come. Where is थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ. प्रेम बढ़ जाए. तो अभी क्यों आया? कैमरा अभी आने का. तो पहले पता होता हुआ नहीं आता. पता नहीं मेरे को मैडम जी क्लोजअप पकड़ कोणाचा पण क्लोजअप पकड वाईट ठेवूच नको कोणाचा पण क्लोजअप पकड मैं थोड़ा हिलना पड़ेगा गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन गेट डाउन जी यहां पर सामने सामने जैकी सर सामने पीछे 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 जैकी सर सामने देखिए कैमरा फ्रेम में कैमरा फ्रेम में कैमरा फ्रेम जैकी सर या लुक फ्रंट लुक फ्रंट लुक फ्रंट लुक फ्रंट सर सामने देखिए सामने देखिए सामने देखिए लुक फ्रंट Dada, 100 years for the. What would you like to say, sir? Also, we are lucky to be here.
with Goldie Saab's family. Yes. With Dev Saab's family. With Rajiv Rai's family. And WAHEEDA ji on top of that. These things don't happen so easily. You're going to be seeing guide भी देख रहे हैं, जॉनी मेरा नाम देख रहे हैं. I think ऐसी बातें होती नहीं है. बड़ा अच्छा लगा. Yes, sir, you have shared so many memories with him. Would you like to share about the memories that you have shared with him? पीछे इसको ऐसे रखना पड़ेगा इसके अंदर और पानी थोड़ा पीछे था ना जैकी सर एक साथ में कर देना कयो हॉल में कयो सिनेमा हॉल में वन बोला तो गायब हो जाते इसको तो खाली देख ही रहे बस तो किधर जाना किधर होगा तो एक मिनट थोड़ा पीछे से लेना जैकी सर हां नहीं देख दवा खा देख दवा हां देख पत्नी गली बना अंदर जा उसका साबुन स्लो है मामा नीचे हाँ जी चाची 15 दिन दे दे पहाड़ों में जाएंगे फिल्म बनाएंगे She's not going to walk all the way on. Which is my second one? Want to be here? Happy here? But you're... तो बैठ मैं इधर मैं सब पॉपकॉर्न ये पूरा में घुमा दिया पूरा चक्कर I run the Film Heritage Foundation and our endeavor to bring classic cinema back on screen. And what is amazing is that it's almost in 50 cities and 80 cinemas, and we are almost sold. That just shows that how hungry we are for these absolutely brilliant classic cinemas. But we are here, a lot of inspiration from Dev Saab. Yeah. His sense of dressing and all the short pants and things which you see of Dev Saab, it's all NFAI and NFDC and FAI for their wonderful contribution.